क्या है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमारे बारे में, देन बेसिक इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है हमारे, हमने इसको ये कॉन्सेप्ट को कैसे इंडियनाइज किया हुआ है, तो थोड़ी बहुत हमारी जो वर्किंग कैसे होती है, एंड फाइनेंशियल मॉडल हम एक थोड़ा सा ब्रश थ्रू करेंगे। व्हाट आई नॉर्मली डू इज, अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम वन ऑन वन फाइनेंशियल मॉडल डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू योर सिटी, तो वो थोड़ा बेहतर होता है रादर देन जनरली जस्ट गिविंग इट आउट और पैन इंडिया के बेसिस पे। तो टुडे वी विल बी टॉकिंग मेनली अबाउट द ब्रांड, द कॉन्सेप्ट, एंड ओवरऑल फाइनेंशियल थिंग्स। So yeah, to basic history about myself, I am Adnan Sarkar. I am one of the co-founders of the company. I basically look into the expansion. I was there when we founded the brand. So this brand is about a 5-year-old brand. More history about me. I am into the hospitality industry from the last 20 years. 20 साल से hospitality में हूँ. We've done hotels, we've done restaurants, bars. तो बेसिकली जितना भी बैक एंड ऑफ द हॉस्पिटैलिटी लाइन है, it is totally covered. I am still running 2 hotels and about 3 restaurants. So this is one of our first foray into the retail line. So this about 5 years back, now we go into the history of the brand कि ये brand हमने कैसे चालू किया. 5 years back we've seen this concept in all the western countries. It is right now the most trending concept in the western countries, जैसे UK हो गया, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया. ये western countries में कुछ ज्यादा ही हिट ये concept है. So when we saw this upcoming over there, we told let's get it into India. So from that time only we started getting this bubble tea concept. So now concept जो bubble tea concept क्या है? तो bubble tea basically एक साउथ ईस्ट एशियन कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है नहीं, एंड ये 50-60 साल से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, जैसे बैंकॉक हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, चाइना, ताइवान हो गया. तो दे नॉर्मली ड्रिंक टी, एंड बिकॉज दे आर सो बिजी, इतनी लाइफस्टाइल उनकी बिजी रहती है, तो टी के अंदर उन लोग साबूदाना या टैपियोका के बॉल्स डाल के पीते हैं. तो इट बिकम द मील इन इट्स ओन. तो लिटरली आदमी चलते चलते एक बबल टी ले लेता है, एंड खाते खाते पीते पीते उनका लंच या डिनर जो भी हो जाता है. तो दिस कॉन्सेप्ट देन ग्रू ऑन टू मिल्क शेक्स एंड कॉफी एंड योगर्ट्स, एंड देन उसके अंदर ये टैपियोका की जगह हम बबल्स, जेलीज, एंड वी स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट. तो राइट नाउ इन all the western country it is a total एक ड्रिंक से अभी पूरा कॉन्सेप्ट बन गया है. सो या, सो दैट इज जो बबल टी जो है वो कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर बबल्स हमारा ब्रांड है. तो या, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो बेसिक आइडिया अबाउट अस, जैसे मैंने थोड़ा बहुत पहले भी बोला है, वी आर अ 5-year-old ब्रांड. वी स्टार्टेड विद 3 आउटलेट्स इन मुंबई से हमने 3 आउटलेट में चालू किया. हमने ये कॉन्सेप्ट पहले इंडिया में लाके देखना था कि कैसा चलता है, एंड ये तीनों आउटलेट जो हमने किए अलग अलग लोकेशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशन में किया. एक हमने मॉल में डाला, एक हमने जो खाऊ गली एरिया जो होता है या ईट स्ट्रीट होता है उधर डाला था, और एक हमने हाई स्ट्रीट जो शॉपिंग काइंड ऑफ रोड रहता है, एकदम हसल बसल वाला रोड रहता है, हमने उधर डाला था. तीनों जगह पे हमको मालूम पड़ गया कि हमारा कस्टमर जो टारगेट ऑडियंस है, जो कस्टमर बेस है हमारा क्या है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसको जैसे फिर हम वी सॉ दैट द कॉन्सेप्ट इज मूविंग, वी स्टार्टेड लोकलाइजिंग एवरीथिंग. पहले इनिशियली जब भी हमने चालू किया तो ऑल इंग्रेडिएंट्स वर इंपोर्टेड, तो इसमें कॉस्टिंग हमारी बहुत हाई थी, तो वी हैड टू लोकलाइज. सो नाउ 80% थिंग्स वी यूज आर लोकलाइज्ड इन द मार्केट. Now one thing you take, why do you take, why do you choose a brand? आप डॉक्टर बबल्स को साइड में रखे. इन सेंस फर्स्ट तो आप फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं? आप फ्रेंचाइजी इसीलिए लेते हैं बिकॉज यू वांट टू एंटर इनटू द न्यू इंडस्ट्री एंड यू डू नॉट हैव बैक एंड नो हाउ. आपको फ्रंट एंड में आप टोटली मोटिवेटेड हो, यू हैव द फंड्स, बट आपको बैक एंड नहीं है. तो बैक एंड के लिए दैट इज व्हाई यू चूज अ ब्रांड. एंड नाउ व्हाई डू यू चूज डॉक्टर बबल्स? Why I would say Dr. Bubbles को choose करना चाहिए, because normally people just go in for a cafe, and cafe में everything is exactly the same. जो बाजू का कैफे सर्व कर रहा है वही आप सर्व कर सकते हैं. आप वही कैपेचिनो सर्व कर सकते हैं, थोड़े बहुत सैंडविचेस सर्व कर सकते हैं, वही सेम मिल्क शेक सर्व कर सकते हैं. बट इन आवर कॉन्सेप्ट we do serve all of that, but everything is totally different. So it is a total unique concept, unique brand, and innovative brand, because everything we have is unique to us. Another thing, because we have localized everything, we manufacture most of the raw materials, the profit margin is very high. आप normally brands देखेंगे which work at about 40 to 50% margin. We are working at 70 to 80% margin on most of the drinks.
Another thing, हमने खाली bubble tea नहीं रखा हुआ है. We've grown a line to shakes and coffees and teas. Then we've even got in waffles का पूरा line लेके आया, full desserts का line है, savory का line है. We even have proper chai का भी concept है. So there is something for everyone. We are focused towards the teens, the younger audience. But अगर कोई पूरी family आती तो हम पूरी family के लिए कुछ ना कुछ है. Another thing, why do you choose a brand? Because you want to see that you already established brand. So we opened 45 plus outlets in the last 5 years. We have got 4 to 5 awards to our name, and most of the awards are for innovating of new products. Another thing, you want a brand जो आपके हिसाब से adapt कर सके, आपके हिसाब से आपकी city के हिसाब से adapt कर सके. So because we are into manufacturing also, we can customize our raw materials according to the city. Like for example, I will tell you, in the Gujarat sector, all our drinks are slightly more thicker. All our drinks are slightly more sweeter. And our Maharashtra sector, जो मुंबई के outlets है, there mostly people want everything according to health. So there everything is automatically more healthier. So we can modify the raw materials according to the city also. Another thing, we give you total control. Our the franchise model, it's a FOFO model. FOFO model मतलब franchise owned and franchise operated. So you have total control over the whole outlet. ऐसा नहीं है कि आपने हमको जगह दे दी and हम आपको खाली हिसाब बेच रहे हैं, जगह अपने आप चल रही है and you have no control over it. You have control over the staff, you have control over the raw materials, but we will be totally hand holding you. ऐसा नहीं है कि हम आपको totally छोड़ देंगे. In sense, we will be totally hand holding in training, setup, daily operations, staff procurement, raw material procurement, everything will be from our side. So in sense, you have to do the business, but we will be supporting you totally. Another thing required is staff. Staff जो normally लोग बोलते हैं कि यार हम एक concept ले रहे हैं तो staff अगर आपका नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? And you are always क्या बोलते हैं dependent on the brand to give you staff because maybe like for example बिरयानी का outlet है तो अगर आप अपना शेफ रख लेंगे तो मे बी वो सेम टेस्ट आएगा नहीं. बट इन आवर कॉन्सेप्ट एवरीथिंग इज मशीन बेस्ड एंड जो हमारा रॉ मटेरियल है इट इज ऑल प्रीमिक्स. तो वो प्रीमिक्स को आपको मशीन में डालना है निकाल के सर्व करना है, दैट्स इट. तो उसके वजह से आपका जो कॉन्सेप्ट है इट यू डोंट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड शेफ. आप कोई भी बंदे को, आप अपने ऑफिस के प्यून को भी पूरा ट्रेन कर सकते हैं करने के लिए. पर्सन हु नेवर वर्कड इन दिस इंडस्ट्री, अ टोटल फ्रेशर कैन आल्सो बी हायर्ड एंड हम उनको पूरे एक दिन में पूरा ट्रेन कर सकते हैं to do this concept. Yeah. Now we'll come up to what kind of space you require. So normally brands जो cafe रहते हैं they want 500 to 1000 square feet का area. Now what we've done is we've made this concept a very small 150 to 250 square feet kind of a concept जिसके अंदर आपका investment भी कम रहता है. It becomes easy to operate because our products now it's 2 to 3 minutes का turnaround है for our shakes and everything. Those 3 मिनट में बन जाता है. So you do not want people to occupy your sitting for a longer time. So we basically try to keep it a takeaway kind of concept and very minimal sitting. To and every concept you start, you want to see profits from the day one. तो अगर आप छोटी दुकान रहती है तो आपका रेंट भी कम रहता है, आपको स्टॉक्स पे इजीली कंट्रोल रहता है, आपका स्टाफ पे इजीली कंट्रोल रहता है, एम्बियंस बनाना बहुत इजी हो जाता है. एक होता है डेकोरेटिंग द प्लेस, जो इंटीरियर डिजाइनिंग हो जाता है, जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है एंड टू सेट अप द प्लेस बिकम्स मोर इजियर. अनदर थिंग जितनी बड़ी जगह उतनी ज्यादा लोग लगते हैं उसको भरने के लिए. एंड एक कॉन्सेप्ट है हमारे बिजनेस में कि क्राउड ही क्राउड को पुल करता है. मार्केटिंग तो करेंगे ही करेंगे बट क्राउड को पुल करता है. तो छोटी जगह जितनी रहेगी वो क्राउडेड लगेगी, बड़ी जगह जितनी रहेगी वो खाली लगेगी. So that is why to create an ambience, the smaller shop becomes better. And the last and the most important thing, आपका रेंट अगर कम रहेगा, आपकी सैलरीज अगर कम रहेगी, आपके स्टॉक्स पे कंट्रोल रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट बिकम्स सुपर फास्ट. Yeah. Another thing, just basic ideas about the concept. All our concept very lab themed here because how we do it. Everything is customizable. आपको पहली बात तो आप टी चूज कर सकते हैं, शेक चूज कर सकते हैं in some specific flavors, फिर साइज चूज कर सकते हो. उसके बाद में आप उसकी टॉपिंग चूज कर सकते हो. उसके बाद में उसका जो सर्विंग जो ग्लास है, बॉटल्स है वो चूज कर सकते हो. जो टॉपिंग्स है जैसे बबल्स हो गए, जेलीज हो गए, everything we have about 20 different flavors. So it's like an experiment. So all of our outlets across India look exactly the same. Then people say कि खाली drinks ही है. Yes, our USP is bubble tea, but our waffles are also very unique. We come on to the other slides. You'll see the waffles, the shape, the sizes, the look is completely different than what you get into the market.
most of our ingredients are localized, but जो specific ingredients होते हैं we still import, so you don't lose the flavor. Another thing, our brand is pure vegetarian. इसमें हम कोई भी animal products का किधर भी use नहीं करते. Some things में तो we are totally vegan. So our shakes and our जो bubble teas है, they are actually made vegan. They are made with non-dairy creamers. So we have purely no animal products whatsoever. Yeah, sorry. So another good part is we are all freshly, handmade to order. So for example, someone wants a less sweet, someone wants it more sweet. So we can always cater it to the customer's requirements. And इसके अंदर कोई भी science की जरूरत नहीं है. It is a very easy process. हमारी सब machines make it ultra easy to do anything. These are some of our franchisees. These are some of our awards. I will be putting this slide up when we are doing the Q&A, जिसमें मेरा personal number भी है, मेरा personal email ID भी है. We can always do a one-on-one on the phone. I personally handle each and every franchise on my own. एक connect होता है direct. Because the brand is so different, rather than another person speaking about the brand, I personally take care of each and every person directly. So I would love to call you, speak to you all after this presentation if you all have some question. Now this is one of the biggest questions everyone asks कि brand का support क्या रहेगा. हमने आपकी franchise ले लिया, हमने setup कर दिया, concept तो बहुत अलग है, आगे जाके आपने हमारा हाथ छोड़ दिया तो इनिशियली हम टोटल डिजाइन, आगे जाके भी जितना भी क्रिएटिव डिजाइनिंग है, शॉप डिजाइनिंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजाइनिंग, एवरी डिजाइनिंग एस्पेक्ट की हमारी एक सेंट्रल टीम है जो पूरा मॉनिटर करती है एंड पूरा सर्विस करती है टू ईच एंड एवरी फ्रेंचाइज. देन ट्रेनिंग हम फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं. ऑनलाइन ट्रेनिंग में 99% सब हो जाता है बिकॉज एवरीथिंग इज मशीन ऑपरेटेड एंड हमारे पास जो मशीन है वही हम आपको सप्लाई करेंगे. तो नथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वही हम आपको सप्लाई करेंगे. तो ट्रेनिंग इज टोटली सॉर्टेड बाय अस. सोशल मीडिया मार्केटिंग, नाउ पीपल से ऑफलाइन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, बट नाउ इफ यू सी आवर टारगेट ऑडियंस जो है, जो यंगर टारगेट ऑडियंस है, राइट नाउ दे आर स्टक ऑन फोन्स, टीवी और कंप्यूटर एंड ये पूरा जो है सोशल मीडिया बेस्ड है. तो इन सेंस we totally take care of all social media marketing. I will be taking questions after the, after I finish my presentation. So please note down the questions and keep it. Another thing, we give total backend support. Like for example, आप बोलेंगे machines आप दे रहे थे service, so we'll be doing total servicing of the machines, total warranties of the machines, and आपको कोई भी breakdown हो कुछ भी है, we'll be supporting it totally. We will be even training you for events. Like now भी bubble tea का क्या सीन है कि bubble tea इंडिया में हमारे सिवा ज्यादा लोग के पास है नहीं. तो पीपल डू कॉन्टेक्ट अस सामने से वेबसाइट से ढूंढ के कि हमारे को हमारे इवेंट्स में बबल टी रखना है या फिर हमारी मैरिजेस में रखना है या हमारे फ्रेंचाइज इवेंट हो, कोई भी ऐसे इवेंट्स पे भी बहुत ही चलता है. तो वी विल बी ट्रेनिंग यू फॉर द इवेंट्स आल्सो, so that will be an एडिशनल वे ऑफ generating income. We can do pan India marketing. So be rest assured that if you are from some tier 3 city, tier 2 city, we can do marketing in every city. So we have a store in North India, we have store in East India, Arunachal Pradesh में भी store है, Chennai में store है, and we do take care of marketing for each and every outlet. Another thing, what we do, like I have told you, this outlet, our concept is very unique, so we keep on coming up with new innovations. We are not stuck with one single concept. Like आप देखेंगे बहुत ब्रांड जो waffle बेच रहे हैं वही waffle बेच रहे हैं, अभी तक आप कुछ भी नहीं कर रहे. So what we do is, we want that customer to come again and again to us for new products. Like for example, आप McDonald's देख लीजिए, उनके जो burgers है वो same रहते हैं, पर उनके जो additional products है वो they keep on changing. So you also want to, like kids also, उनके जो toys रहते हैं they keep on changing. Because they do that, kids again and again go and order that same thing because उनके साथ उनको कुछ नई चीज मिलती है. So that is what we keep on doing. We keep on updating, है ना. हम 90% तो कोई copy concept नहीं रखते. We make our own concept and we launch it into the market. तो कभी-कभी our drink से ज्यादा तो नए concept चलते हैं. Like I'll give you an example. We've recently started savory waffles. जो waffles होते हैं sweet रहते हैं. We started making waffles with potato and उसके ऊपर we put cheese and we put peri sauce, and so that concept of savory waffles is no one else in India is doing it. And the concept in Chennai, the savory waffles is doing better than the drinks also. So we keep on sharing the new innovations with the franchise.
Like I told you, we've localized everything. So all the machines are locally manufactured. Like initially when we got in the setup, only to set up one bubble tea outlet took us about 40 lakh rupees. And now just to set up the whole thing is about 16 to 17 lakh rupees. That includes your franchise fee, your machinery, your opening stock, and the investment into the shop. So 40 say we've come down to, 15, 16 lakh rupees. Yeah. So because we locally manufacture everything. This is how we started, from 2015 to 2018. We've opened about 60, 65 outlets till now all over India. COVID के अंदर थोड़े बहुत बंद हुए, but yeah, now after the COVID thing, it is really started moving. We are opening up about 3 to 4 outlets every month. This is a question which every investor asks me. I normally take this one-on-one with every investor because everyone has different, requirements. But yeah, the biggest question that everyone asks is how do we get a ROI? ROI is return on investment. हम हमारा कैसे जल्दी लेके आ सकते हैं? Now we have to understand that this is a hospitality industry. This is a service-based industry. So if you do not give your full 100% to it, concept में कितना भी दम हो, marketing में कितना भी दम हो, but there is a level of personal attention is required. So if you cannot give a person, 100% attention, you need to hire someone who will give 100% attention. So 100% attention, 100% effort is required to run any kind of business. This is not a remote control kind of a business which हमने दुकान डाल दिया और automatically चलने लगेगा. We will be giving you full, support. Like, why do I say 100% देना चाहिए? Like I told, we are ready to customize, we're ready to modify things for you. But if you only don't know what your customer needs, so the concept will never move like how it should move. Another thing, we do a lot of marketing activities, offline and online, and customized to you. So for example, you have some specific, day in your city and you want some social media material for that. We will make it according to you and we will connect it with your shop. We are a brand. We are also now, this is some big news that we are tying up with Nickelodeon. Nickelodeon is a children's channel and they are dedicating 2 cartoon characters only for this brand. And we will be putting a full Nickelodeon inspired menu officially in all the outlets. So, and our marketing will be there on the Nickelodeon channel also. So this is a hand-in-hand thing we are doing with Nickelodeon, and the future cartoon also characters they will be getting, we will be putting into our brand. Another thing, how to get ROI faster is, doing events, birthday parties, kitty parties. आप मानेंगे नहीं, जितना सेल आप महीने भर में शॉप से करते हैं ना, कभी कभी उतने 2 या 3 फंक्शन से हो जाते हैं या दो या 3 इवेंट से हो जाते हैं. तो इवेंट्स इज रियली गुड, बट या आप जितना शॉप में अटेंशन दे रहे हैं उतना ही आपको देन यू हैव टू कीप अ पर्सन टू हैंडल इवेंट्स आल्सो. Now coming up to the waffles, like you see, जो हमारा center में है, that is like how I was saying, our waffles are different looking. You see in the center is called a bubble waffle. This glass is a half-liter glass. The waffle is so big that it is still half outside the glass. So this impact, once it comes on the table, this is right now the most trending product we have. ये जब भी table पे जाता है ना, इसके 10 फोटो तो निकल ही जाते हैं. And normally, people putting photographs for us is better marketing than us doing social media marketing. So this is the bubble waffle. Then we have something called the American waffles. Normally you get Belgian waffles. Our waffles are different in base also, in style also, and in taste also. They are called waffles. That is why waffle, but they're completely different from the regular Belgian waffles you get, and which is available at every milkshake outlet. तो ये milkshake outlets में इतने बिकते हैं waffles कि अभी waffles का demand ही कम होते जा रहा है. But because our waffles are different, if someone likes this kind of waffle, they have to come to us. On the left, you will see there are pancakes also. Again, normally pancakes are really big. We made it bite size, so you can play around with sauces on them and you can assort them rather than just keeping one style of waffle. Some USPs of our bubble teas: all ingredients are naturally sourced. Then the tapioca, जो bubbles है, हम आज भी कोरिया और ताइवान से import करते हैं because India के अंदर जो manufacturing है is not up to the mark, so we still import it because we need the exact same taste जो international market में मिलता है. बट जो बेस है, जो मिल्कशेक्स है, जो टीज है, जो कॉफीज है, वी मेड इट टू सूट इंडियन बट. लाइक आप बबल टी आउटसाइड इंडिया पियेंगे, इट्स अ वेरी थिन ड्रिंक, बहुत ही पतली ड्रिंक होती है. बट इंडिया में वी मेड इट नाइस, थिक एंड रिच बिकॉज इंडियन पीपल लाइक एंड लव रिच फूड. जस्ट एन ओवरऑल लुक. आप सेंटर में जो हमारी देखेंगे वो सबसे हमारी ऑथेंटिक बबल टी है, टारो बबल टी है, एंड उसके ऊपर ब्लैक टैपियो का जो चूई बॉल्स रहते हैं वो है. बट लेफ्ट में आप देखेंगे
So, we have a mango bubble tea with passion fruit bubbles, right? We have a blueberry coffee, iced coffee. And this iced coffee is very different from the market. I'll come on to the latest, how it is different. And uske upar jellies hai. Then we have lassis. Lassis ke upar also we put jellies and bubbles. So we've actually, toned to the Indian taste. Jaise ab North India and South India mein dekhenge, to lassi is something which moves very fast. And uske andar we have 20 different flavors. Normally lassi kitne flavor mein aap piyenge? Mango, kesar, ya regular flavor. But we have 20 different flavors of lassi also. These are the product lines we have. We have iced tea, जिसके हम अंदर we have about 20 flavors. Milkshakes है, cappuccinos है, bubble waffles है, iced coffees है, yogurt shake जो लस्सीज है, square waffle जो हमारे American waffles है, पूरा चाय का मेन्यू है. This is not just one single product. This is a full product line. These are some of the new additions we've done. A hot tea, mocha का cappuccino है, Taiwanese taro cappuccino है, Japanese matcha cappuccino है. Okay, this is the full menu we have. You can see it's a very elaborate menu. So we will be again putting this whole presentation. You all can please put your email ID. We will be sending you all the, this full presentation, the financial model. So I would please request everyone, please put your email ID on the group. Now we come to the products. Okay, बहुत बातें हो गई about the brand and the concept. Now the exact product we are selling. And why is it different from the market? So bubble tea is basically जैसे मैंने बोला टी में जो tapioca, popping bubbles and jellies डालते हैं, but हमारी tea, we are the only people in India or the whole world to brew iced tea with green tea. Why did we start doing that? Because Indians do not like black tea so much. आपने देखा रहेगा, black tea is considered a very matured or a very healthy product. Not a very healthy, but a very mature, very mature जो old age वाले लोग पीते हैं ज़्यादा, but young लोग चाय ही पीते हैं या फिर कॉफी पीते हैं. But green tea अचानक से जो younger audience है उसमें बहुत hit हो गया. So we started brewing all these bubble teas with green tea. So they become natural. They are full of antioxidants and it is a perfect healthy refreshment. And then उसके बाद में you can play around with toppings in terms of bubble jellies. Now we come to our coffee. Again, very new in the market. We are brew coffee with green coffee. Green coffee किसने सुना भी नहीं है. It has 0% caffeine and it is 0% bitter. इसमें फायदा क्या होता है? You can add flavors and make it more exciting. So it has the full taste of coffee, full aroma of coffee, but is not bitter as coffee. So it's good for young children also. मतलब आप अपने 2-3 साल के बच्चे को भी ये पिला सकते हो because it has 0% caffeine. Again, our shakes, they are thick, rich and creamy shakes, but they are made from a non-dairy base. इसमें फायदा क्या हो जाता है कि it becomes lactose free, allergy free and super low calorie. Again, but it does not take away from the fact that it is a rich, thick and creamy shake. अभी आप कोई भी जगह पे जाएंगे ice-cream shake, it becomes really heavy. Our shakes, even after drinking it, you still feel light as such. So, people love to have it again and again. Again, our lassis, we don't again use any milk products in it. It is made from a probiotic base. It is really good for the body. Healthy bacteria hai. It is not made with real dahi. It is made from a powder-based probiotic base. So it becomes very easy to make. And India में हम किधर भी जो supply करते हैं उसका taste भी exactly same ही रहता है. ऐसा नहीं कि आपने जो local market से दही लिया उसका taste अलग आ रहा है, हमारे यहाँ से taste अलग है. Again, our bubble waffle, जैसे मैंने बताया, it's actually a freak Sunday and it is the most trending concept we have. आप हमारी कोई भी social media page पे जाएंगे, okay, what we do is we make a social media page for your outlet only. We don't, आपको हम हमारे main page के साथ में club नहीं करेंगे. इसमें फायदा क्या हो जाता है कि you get total control over the social media page and you can connect directly with your people rather than everyone as such. Our American waffles, normally, you see these Belgian waffles which are like ring shaped and उसको वो sandwich बना के देते हैं. So our waffles are like really thick. ऊपर से they are nice and crispy, अंदर से nice and soft. So it is like a combination of a brownie, a cake, and it tastes more like a cake than a waffle. A crispy thing से ज़्यादा वो cake जैसा ज़्यादा लगता है. So it's very different and it's pre-cut, so it's not messy. आप एक एक piece उठा के खा सकते हैं. Something very innovative we started. Normally you get an ice cream cone जिसके ऊपर आप ice cream का dollop डाल के खाते हैं. What we have taken the exact same thing, but हम उसके nacho chips बनाते हैं of that same batter and हम ice cream को बीच में डालते हैं. So rather than sharing one ice cream, you can never share a ice cream. But this is the same ice cream which cost as same as the regular thing. So one waffle nacho ka plate will cost you about 100 rupees.
जो आप नॉर्मली 100 रुपीज की आइसक्रीम खरीदते हो, वही सेम ये प्लेट का कॉस्ट है, एंड विच 8 to 9 पीपल कैन लिटरली शेयर दैट आइसक्रीम. एंड समटाइम्स यू बाय आइसक्रीम विच यू डू नॉट वांट टू कंप्लीट इट फुल्ली, बिकॉज आपका जो इनिशियल जो टेस्ट था वो पहले ही खत्म हो जाता है. तो इन दिस यू कैन रियली शेयर योर आइसक्रीम एंड एवरीवन कैन हैव इट टुगेदर. जैसे मैंने बताया पैनकेक, जो हमारे स्मॉल साइज पैनकेक्स है, दे आर स्मॉल, इजी टू ईट, एंड इस पे टॉपिंग ज्यादा एंड डो कम रहता है. नॉर्मली इंडिया के अंदर लोगों को टॉपिंग ज्यादा पसंद है, डो पे किसको इंटरेस्ट ही नहीं है. एंड आप नॉर्मल पैनकेक्स खाएंगे तो डो ही डो से भरा होता है. So that's what we've done. We've focused more on the topping and we've made the dough part really small. So it becomes nice and fun to eat. Now you'll see ये concept तो बहुत ही experimental है. So yes, we have the regular things also. We have a full hot chai menu. We have a full hot coffee menu and we make it onto the proper barista machine. तो ऐसा नहीं हो बटन वाली मशीन पे हम पाउडर बेस्ड वाली कॉफी, हमारी कॉफी प्रॉपर कॉफी बीन से बनती है, चाय हमारी प्रॉपर चाय पाउडर से ही बनती है. तो and we do it all this is done in high end machines. So the taste will be exactly like जो आपको Starbucks या आपको कैफे कॉफी में मिलेगा. It will be that level of coffee, not some regular chap coffee. जैसे मैंने आपको potato waffles के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, तो we use a potato base जो हमारे waffle machine, and best part is we use the same machines जो हम sweet waffles के लिए यूज करते हैं. तो इसके लिए you do not need to add more machine and more infrastructure to make out make this. Something again new we started, ice cream burgers. So we use the regular tutti frutti buns, we use the ice cream we have, and we create a new whole product line using the same materials we have. So just makes you show that we are continuously innovating with desserts and drinks, and but not by investing new things in machinery. Sorry, I'll just have a sip of water. Now we talk about the toppings. Like I told you, the brand is all about the toppings and the base. We earlier spoke about the base. Base means you are base of the drink choose kar rahe ho. Now there will be about 25-30 toppings right in front of you, which you can put in any and everything. So the most authentic thing we have is जो proper जो authentic bubble tea होता है वो tapioca से बनता है. And ये जो black chewy ball, they're very tasteless kind of thing. जैसे साबूदाना रहता है वैसे ही taste का रहता है, but they're black in color. So they're freshly made in every outlet. This is the only thing we have to make every day, but it will be ready made to make. मतलब उसमें आपको कुछ करना नहीं है, वो आपको खाली राइस कुकर में कुक करके कस्टमर को सर्व कर देना है. तो this again we import from Taiwan, not available in India. We are the only ones in India who are serving this in our drink. We do serve chocolate chips. Chocolate chips also we have in 3 different, like we have about 10 mm ka straw. We are the only one again in India to use a 10 mm straw, because the bubbles should come, the jelly should come, the tapioca should come. So we can even do chocolate chips. Again, chocolate chips we just don't have basic one. We have dark, we have mixed, and we have white. Then we have the fruit jellies. Fruit jellies again is slightly different than what we get in the market. Our fruit jellies are made from coconut. Why do we do that? Because normally jellies are made only out of gelatin, and gelatin sometimes can be very सबको gelatin suit नहीं होता है. कोई तो लगता है कि gelatin non-veg base से बनता है. So that's why to get out of that perception we started making out of coconut. But इसमें coconut का कोई taste नहीं रहता है. For example, if you have a passion fruit jelly, it will taste exactly like passion fruit rather than coconut. And again, this can be added in any of your fruit jellies. Your drinks. Now this is our main topping, which goes the most. Is popping bubbles. Popping bubbles होते क्या है? This is something which हमारे जितने भी customers है, they really love. They come back for this. Mostly they come back for the popping bubble. So it is basically a syrup-filled bubbles which goes in your mouth and bursts. So what can we do? Normally आप, for example, you've taken a vanilla shake, and vanilla shake के अंदर you add a kiwi bubble, you have a strawberry bubble, cranberry bubble, and mango bubble. आपने सब डाल दिया. तो every time one bubble comes, उसका अलग से टेस्ट आएगा and वो गायब हो जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक ड्रिंक लिए, उसमें आपको 4 फ्लेवर आएंगे और चारों की 4 फ्लेवर आपको अलग अलग आएंगे. आपको कभी भी एक साथ में इट विल नॉट बी लाइक अ मिक्स फ्रूट शेक जिसमें हमने 4 चीज, सब अलग अलग फ्लेवर आएंगे. तो एक ही ड्रिंक में घड़ी घड़ी आपको कीवी आएगा या आपको स्ट्रॉबेरी आएगा. तो इट बिकम्स अ वेरी फंकी कॉम्बिनेशन टू यूज दीज. नाउ वी विल शो सम डॉक्टर बबल्स पिक्स फ्रॉम सम स्टोर्स. Like you see, we are a very takeaway kind of concept. ये हमारा Phoenix Market City Mall में है.
जिसके अंदर rather than doing a sitting area, we've done a photo op area. So a lot of people take photographs with the drinks and post it online. So we make sure that हमारा branding हो सब जगह. So when people see कि bubble tea किधर से लिया, people come to know they've taken from Dr. Bubbles. This is one outlet we have in Surat. Surat, we have many outlets. In Mumbai, our first outlet, like you can see, lab themed outlet. Even the uniform, if you see of the server, it is basically a t-shirt, but it looks like a lab coat and a suit tie like a doctor. So it's a very fun kind of a concept, but we made it look like a lab theme kind of a thing. Yeah, so you can check out our ratings, our reviews on Zomato. So yeah, so this is the basic presentation. Now I will concentrate more on the financial model, the costings, आपको कितने में पड़ेगा, and what are going to be your margins on the, on selling these things. Yeah. So we'll just go back to the slide where the outlets are there. Yeah. So now we talk about the product costing. So because everything is made in-house and we manufacture most of the things, our profit margin is 75 to 80%. And in the food industry, to get this kind of a profit margin is very, very, very good. आप कोई भी फूड इंडस्ट्री में कोई भी आउटलेट देखेंगे 40 to 50% कॉस्ट के नीचे आपको कोई भी नहीं मिलेगा. We are at a 20% costing, which is unheard of in the food industry market. And we can, when we meet, we can even show you calculations that how good it is. Then people ask us, why don't you make the product cheaper? Now, our product range starts from 100 and goes to about 250, depending on what kind of drink you're taking, depending on what kind of food you've ordered. Now, we don't want to make it cheaper because our concept is unique. It is a premium concept. So we rather give the profit margin to the franchise than the customer. Because if we go cheaper, our target audience changes from premium to a mediocre client, and mediocre client will never experiment in a new concept. So our concept is in the mid-teens and a premium audience rather than a mid kind of an audience. And then we talk about the investment into the shop. So basically, we're looking at a 15 to 16 lakh rupees to open a store. And so, if you see brands, normally brands are looking at about 20 to 30 lakh rupees ke, entry price rehta hai. We made it as low as possible. I'll give you the split for it. So 5 lakhs is the franchise fee in which you get a 5-year contract to run this franchise. 2 to 3 lakh rupees is the investment we have to put in the machineries. 2 to 3 lakh rupees we require for the opening stock. जो initial माल जो आपको stock लगेगा 2 से 3 लाख का लगेगा. Now, फायदा with our stock is everything we give is pre-packaged, which will be with the shelf life of 6 months to 18 months. तो ऐसा कुछ भी आपकी शॉप में नहीं रहेगा जो 2 या 3 दिन में खराब हो रहा है. तो इसमें फायदा क्या है? You can stock it, you can easily plan it, and your wastage becomes zero. Normally any food outlet के अंदर wastage बहुत high रहता है, because कभी गिर जाता है, कुछ खराब हो जाता है. इसमें कुछ भी खराब होने वाली चीज कुछ भी नहीं है. Everything is packaged. Everything is, with a shelf life of minimum 6 months. So इसमें एक ही टाइम पे वेस्टेज हो सकता है कि your server dropped it, broke it, and वो घड़ी तो होता नहीं. Accidents don't happen every day. So the costing becomes very nice. आपके पास जो मैं आपको costing दे रहा हूँ वही costing आएगी. Another thing, 4 से 5 लाख रुपए आपको इंटीरियर में कॉस्ट लगेगा. So this is all included into that 15-16 lakh rupees. So yeah, so basically 15 to 16 lakh rupees is required to start a store. And after that, we take a monthly royalty of 6% on sales. That is before taxes. So yeah, so that's the basic punch through. The financial model is quite easy. If you want a detailed one, we will, like I told, I will be mailing it to you. I do not normally, put a detailed financial model on a presentation. Everyone has very varied, variation of questions to ask. So I would rather do that one-on-one than, doing it on this presentation right now. Yeah. So Ashok, I don't mind taking questions now.